Okay, so today we are going to learn about laws of UX. Okay, these laws are pretty much important, and we are going to study all these laws. एक second. Okay, yeah, so you all can see my screen now. All right, these are called as 10 usability heuristic laws. Okay, so what does heuristic laws means? It's like a thumb rule of the UX design. It's like the way we study laws in physics, right? So simultaneously, in the same way, we have some laws for UX, which if you include or implement in your design, it will be much more UX friendly. Okay, your user interface will be more proper, and people will have it like it will give you more access towards the UX part. Okay, so these laws are really important. I hope you implement this in your design. Most of the time, when we start with usability laws, it's like when you redesign something. Okay, we have redesigning problem statements too, correct? So most of these laws are used for redesigning purpose. Whatever you are redesigning, whatever interface you are redesigning, so for that these laws are very much implementable. But there are few laws which can be implemented when you're designing from the scratch. So I'll be telling you what are these laws and how we are going to put them in the design. So we'll be having some examples simultaneously when we are studying these laws. And I also want this session to be interactive. You guys should also give me some examples. And moreover, don't cheat, like don't look on the Google. Just try to brainstorm yourself and try to come up with some of the examples. Anyways, in the last 10 minutes, we'll be having I'll be giving you some time and you can find out some more examples related to this laws. And it's really simple laws to understand. So you know what, you'll be giving examples throughout your own observation. So it's simple, it's easy to understand. So let's one by one take a look at each and every law. So first law is visibility of system status. I hope whatever laws I'm telling you today, you take out your own notes out of it, okay? So the design should always keep users informed about what's going on through appropriate feedback within a reasonable amount of time. So what this law suggests is wherever is the location of the user, that location should be informed to the user itself. Okay. So in the last session, I have given you some examples, I think, but I'm gonna give it again to you. So you might remember that we were talking about navigation bar. And in that navigation bar, we were talking about the home icon, then the search bar icon, then let's say profile icon. Okay. And let's say there is, if we talk about Instagram, we have reels icon, something like this. Correct. So when you are on, so when you open Instagram, you are always there on homepage. It will always redirect you to the homepage. So how does icons tell you your system status? What exactly you understand by system is? System मतलब क्या होता है? It's like the system you're using. That means the electronic gadgets you're using. So right now, if you're on laptop, this is your system. If you're using phone, that is your system, right? So it keeps you informed. That means the how it keeps you informed in terms of the iconography. This icon is always going to be solid. तो ये हमेशा ऐसा filled रहेगा, filled icon है. You can like go on Instagram and check it right ASAP. That whenever you are on
home page, your icon is filled. If you shift to profile page, then this will get outlined icon and this profile page will get filled icon. So the system is trying to tell you what your status is on that particular application, right? So simultaneously, we have lots of examples for this. So one very common example is if we search for, if you have ordered this thing, let's say you have ordered some parcel from Amazon, okay? After that, if you're tracking your order, it will give you a progress bar. How does a progress bar looks like? Now let's say we are looking for Amazon tracking page. We are here, right? So when you're looking in the mobile phone, your tracking page looks like this. And this particular stuff is called as progress bar. It gives you checkpoints like your parcel today, it's there at, it's like out for delivery, it has been shipped, it is going to arrive today and all that stuff, correct? So it's the phases. And this system is telling you where your parcel is at when it is going to reach at your doorstep. So this progress bar is again an example of visibility of system status. Okay. Then moreover, if we talk about like more examples, if we see, so we have Zomato also. Okay. So Zomato, if you order something on Zomato, it will always give you the system status of your delivery boy. It will always tell you that your delivery boy is reaching in 10 minutes or 20 minutes and where exactly his status is. So it will give you the entire map and you will see the road to like the your road map will be outlined. You'll see the details where your delivery boy is, at what time he'll be reaching, and all that stuff tells you, correct? It's the same again, you'll see same thing about delivery, or if you order a cab, you'll see the system status of your cab. So these are very good examples and you can implement these examples in your designs from scratch. So like this also, like if you have a navigation bar, sometimes the design is different and you can just put a small dash telling users that you're on a home page right now. If they shift on something else, you can shift the dash to the other pages. So this way you're going to tell the users their system status. Any examples coming to your mind, you can tell. You can mention them. इन गूगल मैप्स Yes. नेविगेशन करते टाइम अगर हम स्क्रीन ऑफ भी करते हैं तो उनका ऊपर या छोटे स्क्रीन में भी एक नेविगेशन मोड चालू होता है। और Yes. नहीं तो नोटिफिकेशन बार में भी वो बताते ही इतने देर बाद टर्न है। Yes. तो Yes, Google Maps is also a very good example. There are so many examples, okay? So right now also if I'm speaking in the mobile in the meeting, so my card is highlighted, my card is green and you're understanding that who is the speaker exactly. So that is visibility of system status. Then you talk about your battery. Okay, your mobile battery icons are like this. And if the battery is let's say 20%, then it will be in the red color, right? Then the battery is telling you to get it charged. It's only 20%. So that is again a visibility of system status, right? So how would you know that your battery is dying or it is fully charged or whatever the status is? They're indicating you. If you get a message on WhatsApp or if you get a message on Instagram, then it is telling you how many messages you have gotten, one or two or three. Again, notifications are also visibility of system status. Any स्पॉटिफाई का म्यूजिक भी। yes. स्पॉटिफाई का जैसे म्यूजिक का जो होता है हम्म। बार जो आता है वो भी तो यस। हो सकता है। हाँ, प्रोग्रेस बार जो आता है, करेक्ट, कि आपका गाना कितना टाइम तक है, कितना बचा है या ना, करेक्ट। दैट इज अगेन अ गुड एग्जांपल. Okay. So simultaneously we can have like so many examples, but I think you properly like you got about like what this law is about. It just हम्म, you have to keep your users informed. That's it.
Then let's go to the next law, which is match between system and real world. So you know about what system is, right? Your electronic gadgets and all, that is your system. And real world, like the world we live in the moment right now, correct? So our world is like the real world, and then we have the system world. So if you read out the this thing, what do we say it? Definition. The design Definition. should speak the user's language, use words, phrases, and concepts familiar to the users rather than internal jargons, follow real world conventions, making information appear in a natural and logical way. So, what this is trying to tell you is कि if even if you're making something digitally, then try to keep that connection of digital world with the real world. सो अगर आप कुछ अगर आप कुछ ऐसा डिजाइन बना देते हो, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट लाइक एंटायर डिजाइन, बट सम एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन, जैसे आइकन्स हो गए, जैसे बटन्स हो गए, जैसे कोई भी इमेज हो गया, ठीक है, ऑल दिस पार्ट्स ऑफ डिजाइन, इफ यू ट्राई टू कॉम्प्लिकेट देम एंड इफ यू डोंट लाइक try to build a connection between system and real world, that would be difficult for users to understand what this exact thing is about, right? अभी जैसे आई एम ट्राइंग टू यूज अ पेन ओवर हियर, सो पेन का आप आइकन देखो, इट्स द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हाउ योर रियल पेन लुक्स इन द रियल वर्ल्ड, करेक्ट? सो दैट वे अंडरस्टैंड, ओके ये तो पेन है भाई, मतलब ये पेन है, पेंसिल है, जो भी है, बट आई अंडरस्टैंड कि दिस इज पेन एंड आई कैन ड्रॉ स्टफ फ्रॉम हियर, करेक्ट? सो आई कैन, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड. तो इंटरनल जार्गन्स, जार्गन्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे शब्द यूज करना या फिर ऐसे डिजाइन लैंग्वेज यूज करना जो लोगों को समझ में ना आए. अगर इफ आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू यू इन अ फ्रेंच लैंग्वेज, दैट वुड बी अ jargon फॉर यू. सो इन द सेम वे, इफ यू आर डिजाइनिंग समथिंग, यू हैव टू डिजाइन, यू हैव टू बिल्ड दैट कनेक्शन. सो अभी जैसे काजल टोल्ड अस दैट एग्जाम्पल अबाउट गूगल मैप्स. सो सेम एग्जाम्पल, इफ यू टेक इट, go over here, we open Google Maps. So you can see यहाँ पे we do not have to like uh, एक second, yeah, so this is a satellite view. Yes, it is a satellite view. You can see the terrain and all. Hmm. All right. Okay, this is a satellite view. Yeah. So when you see the maps, it is the exactly same thing how the world would look like in the bird eye view. So you know what bird eye view is, right? Anything which is uh looked at in the top angle. So top से आप जो भी देखते हो, that is a bird eye view. So if you see something, anything, any building, this is exactly how your buildings are going to look like. If you search for your own house somewhere, then you will see that if you see it from aeroplane, it's the top eye view or a bird eye view, that it's exact same replica. So images are being used to create this entire map, correct? So this is again a very good example of understanding Mm. what exactly is मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड. ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. सो इफ यू कैन जस्ट do some brainstorming sessions and tell me some examples of match between system and real world. Same as the pen, we have a eraser. I cannot hear you. Your voice is very low. हाँ, वही बोल रहे, नेविगेशन में सब होटल के लिए होटल वाला जो सिंबल आता है, Temple. टेम्पल के लिए टेम्पल वाला सिंबल होता है। Okay, yes. ओके, मतलब Right. हाँ, और शॉपिंग वाले कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मार्ट्स के लिए अ, वैसे आता है, पेट्रोल पंप का साइन आता है पेट्रोल वाला। या फिर हम वो तो रियल लाइफ में हो जाएगा, उस सिस्टम में नहीं होगा, रोड पे भी नेविगेशन होते हैं वैसे। Okay, yes. हम्म, Right. इवन आप व्हाट्सएप पे अगर किसी का चैट पिन करते हो, At put. दैट पिन पिन इज वाला। ऑल्सो Pin वाला. एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द नोटिस बोर्ड पिन.
right? हम्म। So same, फेसबुक पे भी कमेंट और वो शेयर लाइक वाला सिंबल भी, हाँ, लाइक वाले में थम्स अप रिएक्शन का आता है। जैसा, हाँ। yes, right, okay. So this is again the second law, match between system and real world. Okay, I think you pretty much got it. All right, then we have users' control and freedom. Users often perform actions by mistake. They need clearly marked emergency exit to leave the unwanted actions without having to go through an extended process. So it's more about, I would like to give you a very good example for this. So जैसे let's say अपन जब थोड़े से let's get back to like 6 to 7 years back in those days when we used to use WhatsApp. तो व्हाट्सएप में क्या होता था उस टाइम पे, वी कुड सेंड द मैसेज and if by mistake if we are sending some wrong message in the wrong group, we did not have the control neither the freedom to delete that message. If it is sent, then it is sent, it is viewed by all the people in the group. It might as well be shared in other groups also, because that might be like very inappropriate message because we are doing performing that action by mistake, correct? So that at that time it was very difficult to delete messages because that control wasn't there only. They did not have that delete message ka feature. Now they have given us that control, and now we can have the freedom. Even if by mistake we are doing some actions, performing some actions, we can delete that later on, delete that immediately, right? सो यूजर्स के हाथ में हमेशा वो कंट्रोल एंड वो फ्रीडम होना चाहिए. That is whichever is very important. It's like if you're uploading ugly photo of yourself on Instagram, then and you do not have the control or freedom to delete that photo, right? So that options should always be there. Like emergency exit वाले options हमेशा वहाँ पे होना चाहिए. और else अगर उसकी process भी है, let's say um, when you are on email address, like you have opened your inbox of emails, right? And you have done, like by mistake you have logged into, like you have created some email address, and now there are so many emails you are getting, and you wanna delete that email. You don't want that, you don't want to use that email address again in the future, right? So for that, they have a very lengthy process of deleting an email address, right? If you have ever done that process, it's not like very easy stuff to, it's not like we are deleting photo on Instagram. It's not easy that way. We have a very lengthy process. We have to go in the settings, then in account settings, then somewhere they'll go to the browser, and then on the browser we have to again go with the options and options and options, and then you'll get the option to delete the email address. So if someone wants to perform a task, it should be easier for them to do that. Okay. So this is control and freedom together, right? Even like, let's say, you have a phone and you have a, like, we always change wallpapers of phone. Imagine you're stuck with one single wallpaper which you do not like at all, and you do not have the freedom to change the wallpaper, right? So ये बहुत important है. You should be able to aim, like most importantly ना, delete messages हमेशा होना चाहिए, या फिर delete option में हमेशा होना चाहिए, and it should be very easily marked, like 3 dots में वहाँ पे immediately you can see the delete option, right? So कोई भी unwanted actions जो होती है which users do it by mistake, there should be a way to undo that mistake, okay? और there should be a clearly emergency mark like delete वगैरह clear वहाँ पे होना चाहिए to avoid that unwanted mistake, right? If you can give me examples of this, any examples, anyone? लाइक जैसे अमेजोन Zomato में site, प्रोडक्ट को कैंसिल करना। Yeah, one by one. Yes. on Zomato site, and somewhere like we ordered wrong food or Hmm. by mistake it's order, but we don't want that parcel, so we should have that much freedom to cancel it. Okay.
राइट। उसमें नहीं होता है, वो कैंसिल होता ओके। अमेजोन में होता है, जैसे अमेजोन का मतलब मैं अमेजोन का एग्जांपल दे रहा था कि मतलब जैसे कि कोई चीज हमने ऑर्डर करा, फिर उसका हम ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। है। करेक्ट। हम्म, राइट। यस। तो उस चीज का फ्रीडम है। एंड ऑर्डर कैंसिल एंड कर। जैसे जैसे इंस्टाग्राम में डीएम कुछ करते हैं तो उसको फिर अनसेंड कर देते हैं। एंड यस। बेस्ट एंड वो बेस्ट भी पार्ट है पहले कि नहीं वो होता सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि हाँ हमने अनसेंड कर दिया था। था। राइट, राइट, राइट। सो ये भी कंट्रोल पहले होता नहीं था, आई थिंक, अभी अभी नहीं, बहुत अनसेंड तो पहले। बट पहले से था। इंस्टाग्राम में अनसेंड का तो पहले से ही था। अच्छा, ओके, अनसेंड ओके, ओके। बाद में व्हाट्सएप ने वो ये किया हम्म। उसमें। व्हाट्सएप ने तो हाँ फिर बाद में ये एडिट वाला ऑप्शन डाला है कि मैसेज को आप एडिट भी कर सकते हो। ये करेक्ट, वाला करेक्ट, फ्रीडम दिया था। करेक्ट। ओके। राइट। ये वाला फेसबुक में पहले से था। और पोस्ट एडिट कर सकते हैं हम लोग ना, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। कोई भी हम्म। पोस्ट डालेंगे अब तो एडिट कर सकते हैं, उसका कैप्शन भी एडिट कर सकते हैं, सब कुछ। हाँ ये है ऑलरेडी राइट। इंस्टाग्राम वगैरह में। हम्म। करेक्ट। ओके। सो यू गॉट इट राइट। ऑलराइट। So let's move on to the next law, consistency and standards. Users should not have to wonder whether different words, situation, or actions means the same thing. Follow pattern and industry conventions. So consistency and standards बहुत important है. Um, like in the first session I've shown you some um, consistency between the icons, na? If you might remember, let me just pull out that particular example again because you might not remember. मैंने तो अटेंड ही नहीं करा था तो मुझे पता। Okay, but go through the recordings. तो टाइम ही नहीं मिल रहा मैं आपको। Yes, because problem statement करना है आपको तो उसके लिए यस यस। इम्पोर्टेंट है. सो मेक श्योर यू गो थ्रू प्रीवियस सेशंस. आपने 2 ही सेशंस मिस किए हैं, राइट? तो या करो एंड तो फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लाना है, क्या लाना है, वो समझ में आ जाएगा. Yeah, so I've shown you this particular example of consistency and standards. This falls under consistency and standards. So यहाँ पे we have taken some icons example, and why this particular design is so wrong is because here the consistency is not followed. And when you follow consistency, you automatically bring out standards in your design. Okay, so that is how the process is. So over here you can see we have the outlined icons. All the icons are outlined icons, and that is what is following the consistency. Over here we do not have consistency. We have broken icons, we have like flying icons, and then we have solid icons, filled icons, completely filled icons. So if you use something like this in your design, it will look very bad. That will be a very bad UI, right? So this is an example of consistency and standards. Moreover, if we take a look at university, if you know Savitri Bai Phule University, it's a very famous university of India. It comes under the best university. Savitri Bai Phule University, it is in Maharashtra, Pune. And if you just check out their website, this is their official site. And this is the worst website. You can also like see this UI is very cluttered, and they do not follow standards. Standards, I mean consistency. Kaise? In terms of color theory, what we said, color palette, in terms of typography, in terms of iconography, there is no consistency over there. And even when we talk about the UI, it is very cluttered. There are so many things happening in the landing page. So when we talk ऑलमोस्ट about सारे the, गवर्नमेंट के पेजेस में ये होता है। हाँ, सारे गवर्नमेंट ऐसे ही होता है. सो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली. So when you look for the typography over here, you can see there are so many typographies. When you go with some kind of when you design anything,
you set yourself some typography कि मुझे यही typography use करना है. Let's say you choose a Roboto font and you use the Roboto font in your entire design, right? You do not change that font. If you change it, then there will be like, okay, so that would be the inconsistency. So whatever font you have chosen, you stick on with the same font. So you're happy, you can see there are so many fonts and change of fonts, and some are bold and some are italic and some is it's good thing that they have written in it in Marathi. So Marathi, of course, it's like it's to the all the Maharashtrian people, and Marathi font should be there. So no doubt, no problem with that, no doubt with that. But we are talking about the English typography. There is so much of inconsistency, and UI is cluttered, right? So you can और see a lot of thing is happening. If you're coming over here and checking out, like let's say you wanna check your results, so you'll be like, okay, कौन सा क्या किधर कुछ समझ में नहीं हम्म, आता है, right? And if you think that this particular color, what is this turquoise color is their हम्म, primary color, then they have so many pages, like this is a research page, and you would see that turquoise color is not followed in all the pages, it's changed, right? हम्म, You can see yellow color, you can see other colors over here. So colors also bring consistency. You should also have that particular stuff in your design, and when you use consistency, it will bring standards in your design, right? So never take examples. Okay, so I was giving you these examples. It was just because of the government websites are always like this. But you can check out the awards.com website. यहाँ पे आपको top websites मिलेंगे, award winning websites you will see over here. You can check out all these websites. They have good typography, good color palette, and that brings a good consistency in the design. So ये बहुत अच्छी वेबसाइट है आपको एनिमेशंस. इफ यू वांट इंस्पिरेशंस फॉर एनिमेशन, you can just check out this website. So see, this is a scroll. So scroll effects they have given. This is architecture and interior website. You can see how the color palette is. So you can see the green is been followed, right? Olive green kind of stuff. You will see it a lot of time in their design. ये तो छोटी वेबसाइट है काफी. सो ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हो. इट्स रियली नाइस. आई रियली लव दिस वेबसाइट. So again, this is a scroll effects that they have given. This is a battery website. Really cool. All right. Anyways, so consistency and standards is all about following the industrial conventions. Don't go with the clutter UI. All right. So next, this law is error prevention. So good error messages are important, but the best design carefully prevents problems from occurring at the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for them and present users with confirmation options before they commit any action. So error prevention is like giving error messages over there, like putting out the error messages so that if a user is taking any unwanted actions, like actions again by mistake, then they can prevent that error from happening. ओके, तो ऊपर जो आपने देखा था यहाँ पे वो कंट्रोल देना था अपने को कि वो लोग कुछ भी इमरजेंसी एग्जिट ले सकते हैं. और यहाँ पे इट्स द सेम वे ऑफ पुटिंग आउट द मैसेज. मतलब ये भी एक तरह का एक एरर प्रिवेंशन मैसेज ही है. मतलब एक पॉपअप मैसेज है जो आपको बोल रहा है कि डू यू रियली वांट टू डू दिस स्टेप. तो अगर फॉर एग्जांपल्स let's say you have dressed well, you are going to a function, you're clicking a lot of photos of yourself, and you really are enthusiastic about uploading photos on Instagram.
तो आपने कुछ 10 फोटोज बहुत अच्छे से खींची है, ठीक है, उसमें से कुछ 2 फोटोज आपको बहुत अच्छी लगी है, तो आप बाकी 8 फोटोज डिलीट करने जा रहे हो। बट बाय मिस्टेक आप वो 2 फोटोज भी चूज कर रहे हो जो मतलब गलती से हो गया, और आप डिलीट बटन दबा रहे हो। तो वहां पे एक गुड एरर मैसेज आता है, जो एक पॉपअप आता है, विच pretty सेज कि डू यू रियली वांट टू टेक दिस एक्शंस, लाइक डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस हम्म images, these photos. So then you get it, okay, मेरे से तो गलती से I selected my good photos also, so you click on the cancel option. So these are good error prevention messages. Okay. So simultaneously, another example for you is like when you put wrong ID or when you put wrong password, correct? तो वहां पे भी गुड एरर प्रिवेंशन मैसेजेस का पॉपअप आता है, या फिर एक रेड सेंटेंस आता है दैट योर ईमेल एड्रेस इज रॉन्ग और योर पासवर्ड इज रॉन्ग, प्लीज गो थ्रू इट अगेन एंड देन यू विल बी एबल टू साइन इन और साइन अप, करेक्ट? सो दिस मैसेजेस आर गुड एरर मैसेजेस विच टेल्स यू कि आपने कौन सी गलत एक्शन ली है। ओके। Same with the mobile apps. No? If ये if you want to delete some app and by mistakenly you select uh, two apps, so it will remind us to like you really want to delete it, delete these two apps or not. Yes. correct, correct. So, same error prevention message or error prevention dialog box appears there also, correct. Any more examples you can give? Like in Amazon, when we cancel the order, they ask the reason, and like they ask that you really want to cancel it or not. Yes. Yes, right. And कोई भी चीज, जैसे कि कोई जैसे परमिशन मांगता है, जैसे कि कोई ऐप का कोई परमिशन Yes, एक्सेस मांगना चाह रहा है, कि जैसे कि हम आपका माइक का कंट्रोल लेना चाहते हैं या yes, कैमरा का, तो से लाइक वो दे आस्क द क्वेश्चन कि इफ यू वांट टू अलाउ दिस और correct. नॉट। That is a very good example. Yes. एक आध अभी दिमाग में आए थे। Mm-hmm. Go on. एंड वही कि जैसे कि मतलब लाइक कोई कोई जैसे हम प्रोजेक्ट भी करते हैं, जैसे अभी जैसे फिग्मा का ही हो गया, Hmm. कि लाइक वी इफ वी रियली वांट टू सेव द प्रोजेक्ट और नॉट, सो उसमें ऑप्शन दिखाता है यस नो एंड कैंसिल का। तो Mm-hmm. वही है। फिग्मा में ये नहीं है। फिग्मा नहीं है, चलो इलस्ट्रेटर या अदर्स, जैसे यस यस, पेंट, जैसे पेंट का मतलब कर प्रिंट लेते हो हैं। गया, पावर पॉइंट हो गया, यस। वहां पे दैट योर फाइल इज नॉट सेव, डू यू रियली वांट टू एग्जिट द फाइल, करेक्ट? सो वहां पे ऑप्शन मतलब वो एक बहुत गुड एरर मैसेज है, मतलब दिस इज दैट इज द बेस्ट गुड एरर मैसेज आई हैव एवर सीन, दैट बाय मिस्टेकली वी हैव नॉट प्रेस द लाइक कंट्रोल ए और शिफ्ट ए नहीं, शिफ्ट एस 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 कंट्रोल एस, यस, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस, राइट। तो अपन ने किया नहीं है एंड देन वी आर एग्जिटिंग द फाइल एंड देन दे आस्क अस कि दिस इज नॉट सेव्ड, द चेंजेस आर नॉट सेव्ड, एंड डू यू रियली वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन एनीवेज और नॉट। हाँ, ईमेल्स में भी हम ईमेल डिलीट करते हैं तो वो फिर से एक हाँ, बार कंफर्म करता है कि यू रियली वांट। कि जैसे हाँ मतलब जैसे अंडू पॉपअप आ जाता है या कि दिस मेल इज लाइक वो हो गया, तो अंडू कर लो। करेक्ट, यस। If we working on some files like हम्म। edit files on Figma and we already saved it, okay, and we do rework on it हाँ, like editing and all, then we forget like this file is already saved, but we again save it, then it gives a pop-up to you really want to like क्या बोलते हैं इसको? डिस्कार्ड द चेंजेस और सेव द चेंजेस टाइप्स ना। अजून ते एक रिसेव असं काय. फिग्मा मधलं नाही माहिती, बट हम जो भी ये एडिट करते हैं तो वो ये एडिट रखना है आपको कि डिस्कार्ड करना है या सेव करना है चेंजेस। फोटो एडिट करते हैं उसमें भी आता है। वो सेम फाइल यस यस, जे सेव करना है तो वो रहता है. करेक्ट। हम्म। सो यू गाइस प्रीटी मच गॉट इट। ओके। और ये सब आप डिजाइन करते हो, सो दिस इज समथिंग यू कैन इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। मैंने एक जगह इंटर्नशिप करी थी यूआई की, लेकिन हाँ हाँ। वो इलस्ट्रेटर में करी थी वो
बस वो खुद ही नहीं कर इलस्ट्रेटर। पा। हाँ, बस मेरे को इलस्ट्रेटर में डिजाइन बनाने को बोलते थे, बाकी वो खुद ही करते थे। तब तो शायद फिग्मा भी नहीं था, आई गेस। अच्छा। फिग्मा तो नया है ना, आई गेस। हाँ, नया नहीं, सब। नॉट दैट न्यू, इतना ज्यादा भी नया नहीं है। बट उतना ज्यादा लाइक जैसे अभी, जैसे हाँ पिछले साल से पहले। जैसे ट्रेंड ट्रेंड था, मतलब वैसा ट्रेंड नहीं था तब। तब हाँ, यू लोगों कैन को सी पता भी नहीं था तो तब। इलस्ट्रेटर में ही, मतलब लॉट ऑफ कंपनीज आल्सो हैड दिस रिक्वायरमेंट कि आपको फोटोशॉप, सॉरी, एडोब इलस्ट्रेटर भी आना चाहिए और फिग्मा भी आना चाहिए। सो या, तो है नहीं, लाइक ये 2-4 साल पहले की बात थी तो, मतलब। 2-4 साल पहले नहीं, तो तब तो फिग्मा तो बहुत ट्रेंड में था ही, है अभी भी, तो मे भी उस। 2020, 2021 या 2021 की बात है, yes। ओके। ओके, ये बिकॉज 2022। 2020, हाँ ठीक है, हो सकता है, बट आई थिंक लाइक वो आई उनका वाज इस यूजिंग सिग्मा एट दैट टाइम, लाइक। उस टाइम, मतलब वो ट्रेंड चल, मतलब एक स्टार्टअप कंपनी में था तो उनका हम्म। ट्रेंड चल रहा था कि वो जो चल रहा था ना उस टाइम मेटा का। हाँ तो हाँ। मेटा का गेम वगैरह का वो काम कर रहे थे, तो उसी में मतलब वो इलस्ट्रेशन के लिए रखा था, ओके ओके ओके। यूआई इलस्ट्रेशन वगैरह। ऑलराइट, ठीक है। So, shall we move on then? या। Okay. So, the sixth law is recognition rather recall. Minimize user's memory load by making elements, actions, and options visible. The user should not have to remember information from one part of interface to another. Information required to use the design, example, field labels or menu items, should be visible or easily retrievable when needed. ये this law is my favorite law because this helps a lot. Because ये लॉ आपको समझेगा कि लाइक आपका कितना टाइम सेव करता है, दिस recognition rather recall. So this law says कि don't let the user memorize the steps. Okay, so for them you make the actions very easy. जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले डाली है, वही इंफॉर्मेशन आप फिर से सजेशन बॉक्स में दिखाओ, ताकि उनको बार बार वो फिल आउट ना करनी पड़े, ठीक है। सो फॉर अच्छा, एग्जाम्पल इज लाइक, आप समझ गया। आज घर से जा रहे हो ऑफिस बाय टैक्सी, so that means you're using Uber application. तो Uber में you're using it for the first time, you're entering your uh, home address, and then you're putting your destination address, that is your office address. So while returning also you're going to use Uber only, okay? So वहाँ पे you do not have to enter the office or your home's address again, because that information is already saved by Uber. So that will come in the suggestion bar or suggestion box immediately, that this the address that you're searching for, do you want to go to this address again? So ab bas you, within one click that address has been fetched for you, and you can call the Uber, correct? So it's like, वो जो action है, you do not have to repeat it again and again. So that is what recognition rather recall. Don't let the users recall the information again and again, uh, or else like make that information saved in the system, so that within one click that information is filled up. So fill labels के साथ ये बहुत बार होता है, अगर आप if you're filling some forms, and for once if you ask Chrome to save that particular information, and for the next time that Chrome will automatically fill out that entire information, your name, your address, your information, email address, your phone number, everything within one click, right? Same way, आप जब भी email address and password डालते हो, if you ask Chrome to save it, so next time when you're logged out and when you're logging in again, that information is done within one click, you're logged in. So it is easily retrievable information. So so there are so many examples of this, and this is something you can use it from use it in your design also. Okay, recognition rather recall. जो जैसे आप आज ने कुछ लेट्स से जोमेटो से बिरयानी खाई है, एंड लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि यू ऑर्डर समथिंग really good, and usually you forget the restaurant's name.
and next day you're craving for the same food and you do not remember the restaurant's name, so you will always go and check your order history. You will like Hmm. your orders will be there only, so you'll understand, okay, this is the biryani and this is the restaurant's name. So you're ordering it in again, and it will always come in your suggestion box. Okay, last time you ordered from, let's say, Kimling restaurant, today also do you want to go with the same restaurant? Correct. So this is the very usable law, recognition rather recall. Agar I want to hear it from you, if you can give me more examples about this. एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस रहते हैं। और अभी एक नया फीचर भी आया है फोन में, जो हम कोई भी शॉपिंग ऐप या किधर से भी हम कुछ एड्रेस या अपना नाम और अपने पर्सनल डिटेल्स, प्रोफाइल डिटेल्स जो करते हैं ना, वो एक हम्म। सेव होता है, ऑटो फिल वाला ऑप्शन आता है एक ऑटोमेटिकली। जो यस। हमारा एक डिफॉल्ट एड्रेस हम सेट करते हैं, वो ऑटो फिल हो जाता है सब यहाँ पे। मेन तो And वही है, जैसे create फॉर so एग्जांपल much, लाइक so many accounts on Google, हम्म। like so on so many apps. So there is Google provide us one option for the key. So many email, पासवर्ड। so पासवर्ड। many email address and password are saved in the key. So this is very good option for like mm, many more people have that problem to forget their email address and password. So there is one good option for the like to create from Google, like a key option. Key option is there for the save your email address and password. ओके। यस 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 यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। हम्म। राइट। ओके, आई थिंक यू प्रीटी मच गॉट इट। All right. So let's move on to seventh law, flexibility and efficiency of use. Shortcuts hidden from new voice users may speed up interaction for the expert users so that design can cater both inexperienced and experienced users, allow users to tailor frequent actions. सो न्यू वॉइस यूजर्स एज इन जो न्यू यूजर्स रहते हैं, जैसे आई हैव टोल्ड यू दैट योर टारगेट ऑडियंसेस आर गोइंग टू बी पीपल हु आर 50 year old or 60 year old also, because they also use smartphone. So for them, um, they are inexperienced users, they don't know technology that well. Correct. So उनके लिए, if they are having some frequent actions, let's say there is a 40 year, not 40 year old, let's say 50-year-old female or woman who's using phone just to call her son. Okay, so that is a frequent action that she is taking. So you can just pin her son's number or son's contact on her home screen. So that is a shortcut that you're creating. Correct. So that is much more easier for her as an inexperienced user to tailor that frequent action. Correct. Same way, the way you, like, let's say you're talking with someone, let's say your partner or anyone on WhatsApp on a regular basis. So that is a frequent action that you do on a regular basis. So what you do is you try to pin their chats at the top. तो आपको अगर कभी बहुत ज़्यादा messages भी आ जाते हैं, so you do not have to search their chat and try to fetch that address or fetch that contact, right? So you'll always pin the important group, important people at the top. So that is like you're creating a shortcut for yourself. Same way for the Snapchat also, if you're snapping everyone, sorry, a particular person or particular group, you can pin them on home page. So that is nothing but flexibility and efficiency of use example. Okay. If you have more examples, you can give examples like that. Same on लाइक Instagram. Like Yeah. one option is there, a close friend option is there. If you want to put some story, but Yeah. this is very limited for the like we just want to show to our friend or close friend. We don't want to like show to our relatives. So, so close friend option is there. Okay. Yeah. एक तो जैसे कि एक्चुअली एक इंस्टाग्राम ने ये भी निकाला था कि जो एक शेयर वाला ऑप्शन आता है, वो अगर Yes. अभी तो वो बंद हो गया, होल्ड ऑन करते हैं तो Yes. आपके जो जो फ्रीक्वेंट
चार पर्सन चैट है, पे। अ, यस। उनको डायरेक्टली होता था करेक्ट उस। करेक्ट, पता नहीं वो ऑप्शन उन्होंने क्यों बंद किया, वो हाँ बहुत अच्छा बहुत था ज्यादा वो। ऑप्शन अच्छा था। यस। अभी तो होल्ड किया तो दूसरे एप्स आ जाते हैं। व्हाट्सएप और ये ट्विटर मैं इसी का ऐसा आता यूज करती थी, राइट। है। यस। दैट वाज वेरी लाइक, वो बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो जाता था। अभी हाँ बटन्स एक्स्ट्रा टैप करने पड़ते हैं। एक्चुअली मैम एक दिन के लिए और एक अपडेट आया था मेरे इंस्टाग्राम पे। जो हम्म। हमारे रील्स हम स्क्रॉल करते हैं उधर ही साइड में ऑप्शन आते थे, जो फेवरेट फोर या ओ। वो यस यस। भी एक एक दिन के लिए मैंने देखा था वो ऑप्शन, कि डायरेक्ट वो रील में ही नीचे एक ये आता था कि सेंड टू। स्क्रोल बार। हम्म। ओके। ये एक दिन के लिए आया था, आई गेस वो टेस्टिंग बेसिस पे हाँ, होगा वो। टेस्टिंग कर रहे होंगे। यस। यस। राइट, बट एक वो तो प्रीवियस ऑप्शन वाज रियली गुड। यस। एक तो मैम जैसे कि विंडोज के टास्क बार में ही हम जैसे कुछ एप्स डाल सकते हैं कि शॉर्टकट के लिए, जैसे मुझे अपना कोई यस। सॉफ्टवेयर या कुछ खोलना है तो वहां से करेक्ट। डायरेक्ट क्लिक कर लिया। एक जैसे आपके लाइक अभी क्रोम में जो खोला हुआ है, नीचे जैसे जीमेल यूट्यूब के जो शॉर्टकट्स जो है। है शॉर्टकट्स है, तो यहाँ पर भी आप शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो कि लाइक इजीली एक्सेसिबल है, कि मुझे लाइक मतलब सर्च नहीं करना पड़ेगा गूगल में टाइप करके, वहीं पर ही मैं डायरेक्ट यूट्यूब में क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे करेक्ट। राइट। वो है। ऑलराइट। एनीथिंग एल्स? राहुल इज वेरी क्वाइट टुडे। है मीटिंग में राहुल? ओके यस। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। वी कैन नॉट हियर यू राहुल। एनीवेज ओके। All right. So this is again, this is like shortcuts. You can you can study other applications also, how they create shortcuts. Like WhatsApp is really good example for that. And also Instagram, जैसे काजल ने बताया कि drag करो, like hold करो तो options आ जाते थे. So you can check out more applications like that if someone is using shortcuts. Take inspiration from them, implement it in your design. Okay. All right, then we have aesthetic and minimalistic design. Interface should not contain information that is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in the interface competes with the relevant unit of information that diminishes their relative visibility. So again, इसका जो example है aesthetic and minimalistic design. Of course, Savitri Phule University or any government website is not an ideal example for this. बहुत But an हौसला। ideal example is, you can say Google is हम्म। a search engine. So this is very ideal example for aesthetic and minimalistic design. Okay, how again, जो उनका motto है, whatever is the primary goal. Google is a search engine, right? So you want users to come on Google to search for any kind of information. So yes, that's why it is fulfilling their primary goal. So that's why their that page looks very neat and clean, right? It's to the goal. It's on the point. They would have gone like if like 2017-18 में अगर आपने कभी गूगल एंड याहू का उस टाइम पे कंपटीशन चलता था, राइट? याहू यूज्ड टू बी आल्सो देयर इन सर्च इंजन। तो याहू का आपने सर्च इंजन अगर देखा होगा, तो उस टाइम पे सर्च बॉक्स वाज एट द वेरी कॉर्नर, एंड बाद में वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज आर्टिकल्स, एड्स वर रनिंग, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, राइट? और गूगल का कंपैरेटिवली बहुत सॉर्टेड रहता था. So that is not a aesthetic design or minimalistic design of Yahoo, rather Google's is. And आपको अगर more ऐसे like aesthetic और minimalistic is more like जो भी आपका गोल है बस उतना ही cater करो, ठीक है? और aesthetic जो है, so you can go with some kind of animations. Animations also bring aesthetic. Your color palette brings a lot of aesthetic. Okay, your photography also brings aesthetic in your design. जैसे मैंने बोला, एक बार एग्जांपल दिया था कि अगर आप डिजाइन कर रहे हो, लेट्स से कोई फैशन ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो वहां पे इफ यू आर यूजिंग अ बेज कलर एज योर प्राइमरी कलर,
try to put photographs also in the background of beige color, right? It would bring consistency and that will also bring aesthetic in your design, right? आपका पूरा डिजाइन aesthetic दिखेगा. और आप कोई भी आजकल के जमाने की वेबसाइट्स देख लो जिसमें बहुत ज्यादा एनिमेशंस वगैरह है, दोस आल्सो फॉल्स अंडर एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन. ओके, सो ये कुछ इतना ऐसा इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है, दिस इज जस्ट एग्जिस्टिंग लॉ ऐसा है. ओके, हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स. Error messages should be expressed in plain language, no error code, precisely indicating the problem and constructively suggesting a solution. So, again, this is kind of a same law to error prevention and all. Just ये बताना क्या चाहता है कि अगर आप error prevention का मैसेज डाल रहे हो तो वो मैसेज आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में या फिर कोई कोडिंग लैंग्वेज में मत डालो. बस एक यूजर को so users are going to be all over world. English is a common language that internet is using. तो अपने इंडिया के लोग हो गए या फिर ब्राजील के लोग हो गए या जहाँ के भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, राइट? तो उनके लिए प्लेन इंग्लिश में आप मैसेजेस डालो. इवन इफ यू आर पुटिंग इन अ रीजनल लैंग्वेज, देन प्लेन रीजनल लैंग्वेज यूज करो. ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मत यूज करो जिसका मीनिंग सर्च करना पड़े, राइट? So that will also follow in the UX writing also. आप जो भी SEO करोगे, UX writing करोगे, उस टाइम पे भी try to put it in a normal English, better English, so that people will understand what your message is. Okay. Then we have last law, help and documentation. Again, it's best if the system doesn't need any additional explanation. However, it may be necessary to provide documentation to help users understand how to complete their tasks. So this is more about like we have, so let's say you're purchasing a TV today, right? And whenever you get a big box of a TV, you'll always have a मैनुअल विद इट. एक बुक का मैनुअल आता है जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहता है, राइट? रिमोट के कंट्रोल्स क्या है, रिमोट के बटन्स कैसे काम करते हैं, कौन सा बटन कौन सा चीज को ये करता है, करेक्ट? सो दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज हेल्पिंग यूजर्स टू like if they are having some problems, frequently asked questions type of stuff, everything is documented. And on websites, lot of websites has FAQs section, right? So जो भी 10 frequently asked questions say, they will document it. They will tell users how to solve this problem, how to solve that problems. Again, that is coming under documentation, right? You always have a I symbol on help stuff, right? You have I symbol. Something, if something needs an explanation, you click on that I symbol, information symbol, you'll get a whole blog about it. So that is again a documentation. All right. So same way, even if on any website you see messenger box, chat boxes, that is another way of helping users to resolve any problems that they have, right? कॉन्टेक्ट्स जैसे उसमें कॉन्टेक्ट्स का रहता Yes, है. contacts, correct. Anything else coming to your mind for this example? कॉन्टेक्ट्स हो गए तो हेल्प सेक्शन होता है ऑर्डर करने के बाद ऊपर एक Yes, कि डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है या कुछ ऐसे के लिए एक हेल्प सेक्शन होता है, चैट बॉक्स होता है, चैट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. yes, तो customer care will अगर come कुछ under सामान, help. हाँ, अगर Correct. डिलीवर कुछ भी Refund रिलेटेड चाहिए. क्यूरी है तो वो तुरंत क्विक Correct. जैसे उसमें एक जैसे आई गेस जोमेटो में, जोमेटो या ब्लिंकिट में कुछ ऐसा एक कस्टम का भी एक होता है ऑप्शन कि लाइक कि कस्टम डिलीवरी, अगर उसमें कुछ एक कुछ नोट्स अगर डालना हो या फिर डिलीवरी अगर करना है तो आपको मतलब गेट से या तो गेट पे छोड़ने को ही मतलब कह दे, मतलब होता है ना या उसमें हम्म. कि अगर आप सिर्फ गेट में ही छोड़ देना हो या तो मतलब कॉल कर देना, मतलब पहुंचने से पहले कॉल करने का हो. तो कई सारे ऐसे हेल्प माई का गेट वो वगैरह होता है. माई गेट पे होता है ऑप्शन वो. Right. All right. Okay.
कोई लॉ समझ में नहीं आया? किसी एक लॉ में डिफिकल्टी हो, फिर यू वांट मी टू elaborate anything? नो मैम। You pretty much got everything? यस यस। Okay. What about Rahul? राहुल हम्म का माइक इश्यूज है शायद। हम्म LinkedIn. Okay. All right. So what I want you guys to do is, okay, Rahul, no problem. Try to fix your mic next time, so that you would be more interactive. Okay. All right. So I want you guys to like write down all these 10 laws. I'll share this NNG group. So you can go to this NNG group. Okay. They have very good articles on UX design. They have pretty much all the topics covered. So if you're facing any issues or anything you want information, you can check out the NNG website. Okay, so you can write down all these laws and try to sketch out the जैसे मैंने अभी नेविगेशन बार यहाँ पे स्केच आउट करके दिखाया था कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, राइट? So I want you guys to sketch out at least two examples of each and every law. एंड वहां पे आप थोड़ा डिस्क्राइब, मतलब पेन से थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि व्हाट एग्जैक्टली दिस एग्जांपल इज अबाउट। एंड प्लीज डोंट चीट, डोंट लुक ऑन गूगल, ठीक है? ट्राई टू मेक यूज ऑफ योर ओन माइंड्स, ब्रेन्स, एंड राइट डाउन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स रिपीट भी हुए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। And try to document this on FigJam itself. It will be easier for you to sketch and all and on that, and share the link with me. I'll get it checked. Okay. Okay. All right. ओके मैम। Okay. So काजल के साथ वो कौन है? I forgot your name. शुभम। Okay. Because I have to take your attendance, इसीलिए। हाँ, तो लॉगिन में के एक्चुअली हम एक ही जगह पे थे तो सोचा कि एक एक ही साथ कर लेते हैं अटेंड। Yeah, no problem. वो बस अटेंडेंस देना रहता है, so I'm saying. Okay, बाकी कुछ issues, Kajal and Shubham, you guys were not there in the last session. Any Actually, I was traveling to Mumbai to Pune, so okay, you're traveling, and Kajal? एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी मैम।